Okay students, so in the last lecture we had discussed the first rule. The first rule was, if we have a constant in a separate constant, is like, if we have 2, 3, 4, so derivative of the constant will be 0. Derivative of a constant will be 0. Derivative of a constant will be 0. Okay? If the constant is all alone, so if we have only the constant, okay, so that was rule number 1, that the derivative of a constant is 0. Okay, now we will discuss what if a constant is multiplied to a function. Okay, so that's the second one. Okay, so if we have, let us say, y is equal to constant into the function. This is constant, I'll just write it down here. This is the constant, and this whole thing, this is the function. So if constant is multiplied to a function, then what? Then if you want to find out its derivative, right? Okay, so we are finding its derivative with respect to x because this is a function of x, right? Here the function is dependent on x. Here the function is dependent on x. That's why we are going to differentiate this function with respect to x. Okay, if this is a function of t, that is time, then we will differentiate this with respect to time. The derivative of this function. So derivative of this function, that is derivative of y with respect to x. So we'll have to put this, y, whatever is the value of y, that we'll have to put it in. So it's c into f of x. Okay, so in this case you can see that a constant is multiplied to a function. A constant is multiplied to a function, right? This is the case. So in this case the constant is taken out of the derivative. It is not 0. Only when the constant is all alone, then only its derivative is 0, right? So memorize this and then memorize this formula, right? So I'll just tell you one thing. आप में से जो लोग इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले, जिनका मैथ रहने वाला है, उनको ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, मतलब 2-3 महीना पढ़ाया जाएगा. और जो अपने बायो के स्टूडेंट्स हैं, उनको बस जो हम पढ़ा रहे हैं, राइट, इवन जेई वाले स्टूडेंट्स जो हैं, फिजिक्स में सिर्फ जो लगने वाला है हम वो पढ़ रहे हैं, राइट. फिजिक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं. ओके, so whenever a constant is multiplied to a function, we'll just have to take the constant outside. Okay, so take the constant outside and take this inside. So this will become constant into d by dx of f of x. Okay, okay, derivative of this function. Okay, that's all. So this is the second rule. The second rule is that if the constant is multiplied to a function and you are trying to find out its derivative, okay, in that case the constant will be taken outside the derivative, and this operator d by dx, that is the derivative operator, this will be taken inside, right? So d by dx of fx. So then we'll have to just find out this derivative of the function f of x. That's all. Okay, that we'll see later. So this is the second rule. Okay, now let us discuss the third rule. Third rule is, if you have, let us say, a function like this, two functions are there, f of x plus g of x. Let us take one more function, minus h of x. So there are three functions like this, and we can see that these are all functions of x. This is also dependent on x, dependent on x, dependent on x, right? So we'll have to see how this function will vary when x will vary, right? How this function will vary when x will vary. That means we have to find its derivative, its rate of change with respect to x, right? This is the meaning, right? What is the rate of change of y with respect to rate of change in x? So whenever there is change in x, what is change in y? So for that the function has to be dependent on x. Okay, so dy by dx we have to find out in this case. So d by dx is the operator and this is y, this thing is y. So you are writing it f of x plus g of x minus h of x. Okay, so in this case this operator will be applied to these three functions separately. That is, this will become d by dx
of f of x, okay, plus d by dx of g of x minus d by dx of h of x. That's all. So this is dy by dx. This is rule number 3. I hope you've understood what we have to do. If there are many such functions which are added or subtracted, not the case of multiplication. For multiplication we have a different rule. We will discuss that later, but for now, if the functions are added or subtracted, then this dy by dx will be separately applied to all these functions and the signs will remain intact. जैसे थे वैसे रहेंगे. ये plus है तो plus, minus है तो minus. This is rule number 3. I hope you have understood this. ठीक है? Okay, now let us come to rule number 4. So rule number 4 is basically one formula that we have to remember. Okay, so that is called the power rule. That's very, very important. Okay, so what we are going to discuss is the power rule. So I'll make it 4. Okay, so this is 4. So rule number 4. So that's the power rule we are going to discuss. So what is this power rule? This is very, very important. Okay, so if function is x raised to n, right? Okay, this is f of x. Okay, y is equal to f of x is equal. So the function given is x raised to n. Okay, and if you want to find its derivative, then you have to remember one formula. If you want to find its derivative, you have to remember one formula. So in this case, the derivative is dy by dx. Again, d by dx is the operator, y is the function. So we will write x raised to n. Y की जगह पे हम क्या लिखेंगे? X raised to n, right? dy by dx. We want to find out the derivative of this function, dy by dx. But y is equal to x raised to n. So in place of y, we are putting x raised to n, right? That's very simple, right? That's simple. Y is x raised to n, so we're putting x raised to n. और इसका जो formula होता है that you have to remember is that the n will come outside, so it will be n into n x raised to n minus 1. So you have to remember this formula, okay? N into x raised to n minus 1. So this is very, very important, right? You have to remember this formula, the derivative of x raised to n. So you have to memorize it. You have to mug it up right now, right? By your student, you have to anyway mug it up. You have to remember few formulae of derivatives, that's all, and few formulae of integration, that's all. And then we can start with physics, alright? The actual physics, that is the kinematics, mechanics, dynamics, and all this electrodynamics, thermodynamics, all these things will be discussed. But first you have to understand and remember some basic formula of mathematics, right? We cannot get into much detail, you just have to remember it. So now if you have, so remember this like this, if the function is x raised to n, if this is the function, then its derivative will be n into x raised to n minus 1, that's all. If this is the function, if the function is y equal to x raised to n, then its derivative will be n into x raised to n minus 1. Please memorize it, इसको याद कर लो, right? एक बार फिर से, if the function is y equal to x raised to n, then its derivative will be n into x raised to n minus 1. ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है? Now we'll take some example based on power rule, right? Let us take few simple examples, right? So that we can use this formula in our future chapters. Okay, so let us take an example. So let us start with example 1. So let us say if we have x raised to 5, the function is x raised to 5. Okay, now compare this with x raised to n. So this is x raised to 5 and this is x raised to n. So obviously the value of n is 5. So its derivative will be, you just have to use that formula. What was that formula? N into x raised to n minus 1. So n into x raised to n minus 1. That is 5x raised to 4. That's all. Okay, that's also simple. This is called as power rule, right?
सो यू माइट बी वंडरिंग सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये चीज आपको पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स में, जो जेई के स्टूडेंट्स हैं उनको, और जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनको ये कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, वो उनके सिलेबस का पार्ट नहीं है, उनको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो अपने पास है y is equal to x raised to 21, x raised to 21. So let us compare this x raised to n and x raised to 21. So we can see that n is equal to 21. We can see that n is equal to 21. We just have to use that formula, n into x raised to n minus 1. ठीक है, so let's use it when you want to find its derivative. ऐसे मत use कर लेना कहीं पे भी, only when you want to find out its derivative, only when you want to find out its derivative तभी use करना है, ठीक है, ऐसे मत use कर लेना। हाँ, तो ये हो जाएगा n into x raised to n minus 1, 21 into x raised to 21 minus 1. So 21 into x raised to 20. This is the answer for this. Is this not simple? Yes, it's very simple, right? So let us take few more examples, right? So अभी एक example लेते हैं हम लोग यहाँ पे। y is equal to x raised to 5 by 2. Okay, so you can pause the video and you can try yourself. So we are writing here y is equal to x raised to 5 by 2. Okay, so please try this question, pause the video here, try it, I will solve it. तो देखो यहाँ पे if you compare this with x raised to n, you can see that the value of n is 5 by 2. The value of n is how much? It's 5 by 2. So derivative will be, so what's the formula? Formula is n into x raised to n minus 1. So n is 5 by 2. So 5 by 2 into x raised to 5 by 2 minus 1. So 5 by 2 into x raised to, so this will be 3 by 2. So that's the answer. Right? Is it simple? That's very simple. Just we have to use this formula. Let us take y is equal to 1 by x raised to 3 by 2. If this is the question. Then what do you do? So you will write this function as x is equal to minus 3 by 2. You will write this function as x is equal to minus 3 by 2. And because if you take this entire thing from the denominator to the numerator, then this x raised to 3 by 2 is going to become x raised to minus 3 by 2. Alright. And now if you want to find out its derivative with respect to x, then this will become, what's the formula? N into x raised to n minus 1. This is n. The n in this case is minus 3 by 2. The n in this case is minus 3 by 2. This will become minus 3 by 2 into x raised to minus 3 by 2 minus 1. Okay. So this is n. This is n. See. N into x raised to n minus 1. Okay. So this will become minus 3 by 2 into x raised to, take this LCM, this will become minus 5 by 2. So that's the answer. I hope you are able to understand this. It's very very simple, right? So यहाँ पे एक extra step किया हम लोगों ने, इसको डिनोमिनेटर से हम लोग न्यूमरेटर में लेके गए, उसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया है, तो एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो आई होप आप इसको लिख लीजिए, राइट? That's very simple. आपको आ गया होगा how to use this power rule, but we'll still take 2-3 more examples to make the things more clear. तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, वो है y is equal to let us say 1 by x, ठीक है? So we have y is equal to 1 by x. Now what we will do? What should we do? So you can pause the video and just try. Meanwhile, I'll just tell you this is x raised to 1. So I'll take this entire thing from the denominator to the numerator, so that this becomes, you know, x raised to minus 1. Okay. So यहाँ पे this will be dy by dx is equal to, we know it's n into x raised to n minus 1. So first of all we'll have to see कि n क्या है, n का वैल्यू कितना है। तो you can see n का वैल्यू यहाँ पे minus 1 है, ठीक है? तो जो n का वैल्यू है that's minus 1. Alright? So just substitute this. So minus 1. This you'll have to do only when you're finding the derivative using the power rule, ठीक है? So minus 1 into x raised to n की जगह minus 1 minus 1. So minus 1 into x raised to minus 2.
That's all. And if you want, you can write this as -1 divided by x square. So this is the derivative of 1 by x. So derivative of 1 by x is -1 by x square. And this is very useful in physics. बहुत सारे derivations में काम आता है. So you can just memorize it, or you can just understand the steps. Better is to understand the steps, right? So 1 by x का क्या होता है? -1 by x square. That's all. अब मान लो कि एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि अपने पास है y is equal to root x. ठीक है, तो यहाँ पे एक और हमने एग्जांपल दिया है y is equal to root x. तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आप देख सकते हो कि रूट का मतलब होता है x raised to half. ये तो नो, ये जो रूट है दिस इज बेसिकली x raised to half. So now again if you compare this with x raised to n, then आप देख सकते हो कि n का वैल्यू हाफ है. n का वैल्यू कितना है? इज हाफ. ओके, सो यहाँ पे जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम लोग तो फॉर्मूला वही है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. आप बीच में वीडियो पॉज किया करके खुद से ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, तो n की जगह पे हो जाएगा हाफ इंटू एक्स रेज टू हाफ माइनस 1. तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स रेज टू, ये आप सब्ट्रैक्ट कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लो आप, माइनस हाफ. तो इसको आप लिख सकते हैं हाफ इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू हाफ, मतलब 1 बाई 2 रूट एक्स. ये कितना हो जाएगा? I'll write it here. ये हो जाएगा 1 बाई 2 और ये हो जाएगा रूट एक्स. तो 1 बाई 2 रूट एक्स, मतलब अगर y इज इक्वल टू रूट एक्स है तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होगा? 1 बाई 2 रूट एक्स, मतलब स्लोप ऑफ दैट ग्राफ. डेरिवेटिव का मतलब क्या है? स्लोप. तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया. ऐसे ही अगर मान लीजिए कि हमारे पास होता y इज इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स. ये अगर होता, ये फंक्शन दिया रहता, राइट है कि नहीं? दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट, 1 बाई रूट एक्स. और अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना होता, dy बाई dx फाइंड करना होता, तो हम फिर से वही फॉर्मूला यूज करते हैं n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. बट हमें n फाइंड करना पड़ेगा. तो ये जो 1 बाई रूट एक्स है इसको हम लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट दिस, वी कैन राइट दिस एज 1 बाई x रेज टू हाफ, और इस x रेज टू हाफ को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा x रेज टू माइनस हाफ. ठीक है, तो इस फॉर्मेट पे लेके आना. अगर वो चीज डिनोमिनेटर में है तो उसको ऊपर ले आइए, उसको उस फॉर्मेट पे ले आइए. किस फॉर्मेट में? x रेज टू n के फॉर्मेट में, ताकि आपको ये समझना आसान हो जाए कि n क्या है. ठीक है, और एक बार n समझ में आ जाए तो फिर आप क्या कर सकते हो? n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. दैट्स ऑल. ठीक है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो हैसल इन दैट. सो ये हो जाएगा n की जगह पे माइनस हाफ, राइट, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं n इज माइनस हाफ. इसको आप x रेज टू n के फॉर्मेट में ले आ चुके हो, तो माइनस हाफ इंटू एक्स रेज टू माइनस हाफ माइनस 1. ओके, सो दिस विल बिकम माइनस हाफ इंटू एक्स रेज टू माइनस 3 बाई 2. दैट्स ऑल. अब चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, और आपको अगर नहीं ऐसा डिनोमिनेटर में लेके जाना है तो आप ले जाओ इसको डिनोमिनेटर में. यहाँ से हो जाएगा एक्स रेज टू 3 बाई 2. तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, और ये क्या होगा? ये होगा x रूट x. ये क्या होगा? x रूट x. तो ये x रूट x कैसे हुआ? अगर मैं नहीं बताऊंगा तो बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछेंगे सर ये x रूट x कैसे हुआ. तो ये मैं बता देता हूं आपको. ठीक है, ये x रूट x कैसे हुआ. ओके, तो मुझे आपको ये बताना है कि x रेज टू 3 बाई 2 जो है वो x रूट x कैसे हुआ. ठीक है, तो देखो x रेज टू 3 बाई 2 को मैं लिख दूंगा 1, इसको मैं लिख सकता हूं x क्यूब. ठीक है, और ये हाफ, तो ये हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा रूट, तो रूट ऑफ x क्यूब. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू एक्स, और ये हो जाएगा x रूट x. तो इस तरह से यहाँ से x रेज टू 3 बाई 2 इज x रूट x. तो ये लिखिए. आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, दैट डिपेंड्स कि ऑप्शन में क्या दिया है. अगर ऑप्शन में इस तरह दिया है, दैट्स ऑल ओवर. अगर ऑप्शन में रूट के टर्म्स में दिया है तो यू हैव टू डू 2 मोर स्टेप्स, तो 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ेंगे आपको. दैट्स ऑल. तो आई होप आपको पावर रूल समझ में आया होगा, राइट. आई एम श्योर यू must have surely understood, right, what is this power rule. Okay, now let us take one more example. Let us try to use this with other rules. तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दिया है y is equal to x square. अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं उसके बाद. जैसे y is equal to 5x square, अगर ऐसा दिया है, अब क्या करेंगे?
5x स्क्वायर दिया है, मतलब एक कांस्टेंट है एंड इट इज मल्टीप्लाइड टू अ फंक्शन, अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड टू अ फंक्शन। कांस्टेंट है 5 और जो फंक्शन है वो x स्क्वायर, ठीक है। सो इट्स अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड टू अ फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट जो है वो 5 है, फंक्शन x स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर जब भी एक कांस्टेंट फंक्शन को मल्टीप्लाइड होता है तो वो जो कांस्टेंट होता है उसको डेरिवेटिव के बाहर निकाला जाता है, राइट। मैंने थोड़ी देर आपको रूल एक्सप्लेन किया था। तो अब अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स क्या है, ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर है। मतलब ये होता है कि हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं उसको विथ रिस्पेक्ट टू x, हम डिफरेंशिएट करने वाले किसको, उसको मतलब इसको मतलब किसको, इसको मतलब y को, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ y हम लोग करने वाले हैं, तो d बाई डी एक्स, तो y की जगह आप क्या डालोगे, आप डालोगे 5x स्क्वायर, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपने सब इसको अरेंज कर दिया, अभी तक डिफरेंशिएट किया नहीं, आपने डिफरेंशिएट का इसको पूरा अरेंज कर दिया, राइट, सजा दिया इसको इक्वेशन को। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। लेकिन आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, अ कांस्टेंट हैज बीन मल्टीप्लाइड टू अ फंक्शन। तो आप क्या करोगे, आपको बताया है रूल कि जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो, कांस्टेंट अगर ऑल अलोन है, जर कांस्टेंट एकटाच आहे, एकटाच एकदम ऑल अलोन, त्यावेळेस काय करायचंय, त्यावेळेस आपल्याला तो कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0 घ्यायचा आहे, ओके। पण जेव्हा तो कॉन्स्टंट एखादा फंक्शनतून मल्टीप्लाइड आहे तेव्हा त्याचं डेरिव्हेटिव्ह 0 घ्यायचंच नाही, त्याला बाहेर घ्यायचंय, ठीक है, त्याला डेरिव्हेटिव्हतून बाहेर घ्यायचंय, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। जब भी ये कांस्टेंट ऑल अलोन हो, यानी एकटाच हो, ये ऑल अलोन हो, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो। लेकिन जब भी वो कांस्टेंट किसी फंक्शन सोबत मल्टीप्लाइड आहे, फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, तो उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होता, वो डेरिवेटिव के बाहर लिया जाता है। तो आप यहाँ पे 5 को डेरिवेटिव के बाहर ले लो तो ये अंदर चले जाएगा, ऑपरेटर अंदर चले जाएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ क्या लगाओगे, अब आप यहाँ लगाओगे पावर रूल, तो ये हो जाएगा 5 एज इट इज, और ये x रेज टू n है, और x रेज टू n है, यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, तो वो हो जाएगा n इंटू x रेज टू n माइनस 1, यानी 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1, ऐसा हो जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 5 2 से 10, ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x रेज टू 2 माइनस 1 इज 1, यानी 10x। यानी ये जो 5x स्क्वायर है, तो जो डेरिवेटिव आया 5x स्क्वायर का, वो क्या आया, वो आया 10x, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया और इस 2 को 1 से घटा दिया, इसलिए ये हो गया 10x। समझ में आपको, ठीक है, या फिर ये, ठीक है। तो अब मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए, पॉज, और इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, ओके। अच्छा, लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। जैसे मान लीजिए कि अगर ये होता y इज इक्वल टू 5x क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता, तो आप पॉज करके यू कैन राइट डाउन, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव आ जाता, ये 3 मल्टीप्लाई होता 5 से, तो 3 इंटू 5, और ये 3 को हम कम कर देते 1 से, 3 माइनस 1, दैट्स ऑल, यानी 15x स्क्वायर हो गया, दैट्स इट। आप बोलोगे नहीं सर पूरा करके बताओ, पूरा करके बताते हैं, उसमें क्या है देखो, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, यानी ऑपरेटर, ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, द फंक्शन, विच फंक्शन, 5x क्यूब। व्हाट इज दिस फंक्शन, इट्स अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद x क्यूब। सो जब भी ऐसा होता है तो कांस्टेंट को बाहर लिया जाता है, तो आपने कांस्टेंट बाहर ले लिया, ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अभी x रेज टू n है, x रेज टू n है, तो उसका डेरिवेटिव होगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, तो ये हो गया 5 3 द 15x स्क्वायर। तो वही हमने काम यहाँ पे किया। तो जब भी ऐसा है 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 3 5 से 15, 3 को कम कर दो 1 से, x स्क्वायर, दैट्स ऑल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो आप ये सब नोट डाउन करते जाइए, राइट। अब हम लोग बात करते हैं, नाउ लेट अस टॉक अबाउट not talk, let's take more examples। एक एग्जांपल और लेते हैं कि y is equal to मानिए 5x क्यूब प्लस 7x रेज टू 5 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ऐसा एक फंक्शन है। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 फंक्शन है, कितने फंक्शन है, 3 फंक्शन है। तो अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स करना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर अभी आपने बताया था
कि अगर इस तरह से तीन फंक्शंस एडेड हो और या सब्ट्रैक्टेड हो तो फिर हमें डी बाई डी एक्स जो है वो हर फंक्शन पे अप्लाई करना पड़ता है. वी हैव टू अप्लाई इट सेपरेटली टू ईच एंड एवरी फंक्शन. मतलब इसको यहाँ भी अप्लाई करना है, इसको यहाँ भी अप्लाई करना है, इसको यहाँ भी अप्लाई करना है. ठीक है, तो ये हो जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7x रेज टू 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स क्यूब. तो आपको इसको अलग अलग क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा. तो आप चेक कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा. राइट, अब आप खुद कर सकते हैं. 15x स्क्वायर ये आ जाएगा 7 इंटू 5 35 और इसको 1 से कम कर दो 35x रेज टू 4 और ये 1 बाई एक्स क्यूब है. तो 1 बाई एक्स क्यूब को आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे x रेज टू -3. तो n इज -3, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, मतलब -3 इंटू एक्स रेज टू -4. तो -3 इंटू एक्स रेज टू -4 या 1 बाई एक्स रेज टू 4. You can also write this as 1 by x raised to 4. This is the derivative of this. Okay? समझ में आया? Okay. इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है. इट्स वेरी सिंपल. हम लोग सिर्फ पावर रूल यूज कर रहे हैं. ठीक है, वी आर ओनली यूजिंग. सो if y is equal to x square plus 3x, this is the next question. Find dy by dx at x is equal to 1. ये क्वेश्चन है. दिस इज द क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन ये आपसे क्या कह रहा है, आप समझिए ध्यान से कि आपको एक फंक्शन दी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x और आपसे कहा जा रहा है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करो. फाइंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1. तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा. सो स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 1 हो जाएगा टू फाइंड dy बाई dx. दिस विल बी स्टेप नंबर 1. कि फर्स्ट इसका dy बाई dx फाइंड करो. ठीक है, सो लेट्स डू दैट. सो dy बाई dx किसका, y का डेरिवेटिव. dy बाई dx डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. तो y की जगह आप लिखोगे x स्क्वायर प्लस 3x. ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी प्लस और माइनस आता है तो ये दोनों पे अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये एक्स रेज टू एन, तो 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1. ओके, हो गया. और ये हो जाएगा प्लस, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है फंक्शन से तो कांस्टेंट बाहर आएगा. तो 3 इंटू और ये होगा एक्स रेज टू 1, एक्स रेज टू 1. फिर से पावर रूल लगाएंगे आप, तो 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1. ठीक है, ओके. तो मैं इसका आंसर लिखता हूँ यहाँ. तो इसका आंसर हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा. आपको समझ में आया हमने क्या किया. ये यहाँ पे जो ये 3 है ना, 3 कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट इस फंक्शन x से मल्टीप्लाइड है. तो जब भी कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाइड होता है तो हम लोग कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर ले लेते हैं. तो 3 को हमने बाहर ले लिया है और ये बचा x रेज टू 1. तो x रेज टू 1, तो फिर से आप पावर रूल लगाओगे क्योंकि रेज टू 1 पावर में क्या है 1 है. तो आप क्या लिखोगे, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1 इज 1 यानी 2x प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1 इज एक्स रेज टू 0. सो दैट्स 2x प्लस 3 इंटू 1 दैट्स 2x प्लस 3. तो दिस इज dy बाई dx, यानी पहला स्टेप हो गया. दिस इज डन. अब बोला है फाइंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1, what we'll have to do, we'll have to just substitute 1 in place of x. That's all. Very simple. So this will become 2 into 1 plus 3, that is 5. That is 5. ठीक है. And if they ask you, let us say if they ask you, find dy by dx at x is equal to 2, तो क्या करोगे आप. That's very simple. तो dy by dx तो ये है अपने पास, this is dy by dx, right? ये हमने फाइंड आउट कर लिया. At x is equal to 2, so 2 into 2, so x की जगह पे 2 डाल दो, plus 3, so 2 into 2 plus 3, 4 plus 3 7. कोई आपसे पूछे कि find dy by dx at x equal to 3, x की जगह 3 डाल दो.
2 into 3 plus 3, 6 plus 3, 9. That's all. That's very, very simple. Okay. So I'm sure you're able to understand the concept. Okay. So let us take one more example here and understand it in a much better way. Okay. Okay. So let us understand it in a much better way. Suppose आपको दिया गया है क्वेश्चन कि find the slope of the tangent of the curve. Find the slope of the tangent. आप भी लिख लीजिए of the curve. कर्व मतलब फंक्शन, ठीक है ना, एक फंक्शन दिया रहेगा क्योंकि हर फंक्शन का एक कर्व हो सकता है. ओके तो हम लोग को यहाँ दिया गया है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एट -1, 2. ठीक है. सो ये -1 दिस इज द x कोऑर्डिनेट, 2 इज द y कोऑर्डिनेट. ओके सो लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट. ठीक है. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन आवर फर्स्ट लेक्चर, डेरिवेटिव का जो फर्स्ट लेक्चर था, कि अगर ये कोई कर्व है तो ये है टेंजेंट. ठीक है. दिस इज द टेंजेंट. ओके दिस इज y वर्सेस x, दिस इज टेंजेंट एंड द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट. बार बार हमने आपको बताया, क्या बताया, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू tan थीटा. ये आपको बार बार बताया. तो जब भी आपको स्लोप फाइंड करना है टेंजेंट का, इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है या इस ग्राफ का स्लोप फाइंड करना है, तो ग्राफ का स्लोप मतलब यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट और उसी टेंजेंट का स्लोप. सो दैट्स अंडरस्टूड. सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब स्लोप ऑफ द ग्राफ. सो यू हैव टू फाइंड आउट dy बाई dx. स्लोप का मतलब dy बाई dx. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो बोला था, याद कर लो, स्लोप इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू tan थीटा. स्लोप इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू tan थीटा. राइट. तो उस तरह से आप इसको याद कर लो. यहाँ पे भी वही करना है आपको. सिर्फ स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, आपको dy बाई dx फाइंड करना है. राइट. मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है. तो d बाई dx, y की जगह क्या डालोगे आप लिखोगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. ठीक है. तो इसका डेरिवेटिव आप कर सकते हैं अभी खुद, पावर रूल लगाइए. 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1 यानी 2x प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1 यानी x रेज टू 0, तो सिर्फ 3 आएगा और 4 का डेरिवेटिव आएगा 0. ठीक है. यानी 2x प्लस 3. मैं एक बार फिर से पूरा करके बताता हूँ. राइट. तो ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ x रेज टू 2 प्लस d बाई dx ऑफ 3x प्लस d बाई dx ऑफ 4. ये करना है. तो जो पहला वाला है x स्क्वायर, उसका हो जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1, 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1 यानी 2x. ये 3 बाहर आएगा तो 3 इंटू, और ये x रेज टू 1 है तो 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1 वो होगा 1 इंटू एक्स रेज टू 0 एंड x रेज टू 0 इज 1, तो वो हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस ये 4 ऑल अलोन है. ये कैसा है, ऑल अलोन, एक टच आगे, ऑल अलोन है, एक टच है, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो वो हो गया 0. मतलब कुल मिला के जो डेरिवेटिव आया dy बाई dx आया, वो dy बाई dx आया 2x प्लस 3. आपसे पूछा गया है फाइंड दिस dy बाई dx एट x इज इक्वल टू -1. x इज इक्वल टू -1, दैट्स इंपॉर्टेंट. सो बिकॉज दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, नॉट अ फंक्शन ऑफ y. सो एट x इज इक्वल टू -1, हमें ये वाला यूज करना है, -1, 2 नहीं यूज करना है. ठीक है. तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 3. सो -2 प्लस 3 यानी +1. राइट. ये हो जाएगा. समझ में आप लोगों को. ठीक है. सो दिस इज हाउ वील हैव टू डू इट. ओके. So let us take a few more examples. We just have to find dy by dx in this case. So this is the first example here. Y equal to ax square plus bx plus c. We have to find out dy by dx. Okay. In all these cases, you have to find dy by dx. You can pause the video here and you can try all these 4 questions yourself. Okay. I'll just give you the answers for this. So dy by dx will become d by dx of ax square plus bx plus c. Okay. So there are 3 terms to this. So first term, second term, third term, and the derivative will be applied to each term. Right, the first term, the second term, and the third term. So when you apply to the first term, a is a constant. A is a constant, right? A, B, and C are constant. So the constant will be taken outside, so it will become A,
and the derivative of x square will become 2 into x raised to 2 minus 1. Then b will be taken outside, right? So it will become b into 1 into x raised to 1 minus 1. And the c is all alone. It's a constant all alone. So its derivative will become 0. So this will become 2a, this will become x, so 2ax, this will become b, this will become 1, x raised to 0, right? So 1. It will become 2ax plus b. This is the answer for the first one. This is the answer for the first one, okay? Now let us see the second one. So I'll erase the first one so that we have some space here. Okay, so I have erased this. So let us come to the second one. This is second one, okay? So I have to find out its derivative, dy by dx. So in place of y, I'll write x square plus 1 by x square. So there are two terms. So d by dx of x square plus d by dx of 1 by x square. So d by dx of x square will become 2 into x raised to 2 minus 1. Okay, derivative. Plus इसका क्या होगा? इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो this will become x raised to minus 2. ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x raised to minus 2. तो ये हो जाएगा n into x raised to n minus 1. तो ये हो जाएगा 2 into x raised to 1 plus minus 2 into x raised to minus 3. So this will become 2x minus 2 into x raised to minus 3 or 2x into minus 2 by x raised to 3. This is the answer for this. Okay, so you can try, you must have tried it yourself and I'm sure you might be getting this answer. There's some calculation errors, you can check and tell me, inform me. Okay, but I am sure you have understood the method. Okay, so note it down if you want. Let's come to the next question. Okay, I'll rub this, I'll erase this from here. Now let us take the next question, this one. Okay, so in this case again we will find dy by dx, that is d by dx of, in place of y we'll put this, that is 4x square plus 3x square plus x plus 7. So there are 4 terms, so we'll have to apply the derivative separately to all these terms. Okay, so let us start the first term. So 4 is a constant and it's a constant multiplied to a function, so we'll have to take it outside. So 4 is taken outside and this is x raised to 2. So 2 into x raised to 2 minus 1. Okay. Second term, 3 is a constant which is multiplied to x square. We'll have to take 3 outside. And for x square, it will become 2 into x raised to 2 minus 1. N into x raised to n minus 1 plus. This is x raised to 1. So this will become 1 into, right, 1 into n into, this is n into x raised to n minus 1. And this is all alone. A constant which is all alone, uska derivative क्या होता है? 0. So what's the answer? The answer is 4 to the 8x, okay, plus 3 to the 6, and this is again x, okay. This is 1 into x raised to 0 is 1. So basically we get 8 plus 6, that's 14x plus 1. That's the answer for this. Okay. I hope you will understand. Okay, let us take the last example. You can note it down if you want. Okay, I will erase it now. So I will erase it. Okay, let us take this last one for today's lecture. Okay, let's take this example. So we have, again we have to find out dy by dx. So d by dx of x cube plus 4 x raised to 3 by 2 minus 3x. So it's gonna be, for the first term, this is n. So n into x raised to n minus 1. For the second term, this 4 is a constant, we'll take it outside, and this is n. So n into x raised to n minus 1. Okay? And for the last term, this is a constant, we'll take it outside, and this is x raised to 1, this is n. So 1 into x raised to 1 minus 1. So this is 3x square, this is cancelled out, 2 3 is 6, x raised to half, this is minus 3 into 1 into x raised to 0, that's 1. So that is 3x square plus 6 root x, x raised to half minus 3. That's the answer for this. Alright, so you can just check the calculations. If you find anything
wrong or missing, you can just inform me. Alright, till then bye, let's meet in the next lecture.